Hey everyone. So we are back again. Just 1 minute, please. Okay, let's start the session. Yes. So welcome to the session once again. So let's start the discussion on this particular topic, that is the toughest paper in the history of the GATE examination. So as per my knowledge, with the last 30 years का paper analyze करके लोग जो those who are some senior professors than me, with their the discussion with those people, and when I was a student, what I had, by keeping all these experiences in my mind, I'm doing this session, guys. So the toughest paper in the history of the GATE examination is made by IIT Kanpur. Okay, so this is our heading and this is the fact. Okay, so because most we are from electrical and ECE, I am speaking about those particular papers only, not for the other branches. So see here, so the new batches are going to start today, and there is an offer with an academy subscription, guys. If you have a plan to take the subscription, don't delay it further. 24-25 aspirants के लिए आज से नया batch शुरू हो रहा है. So and also there is a great offer. You can save up to 30% when you, your friend, your junior, anybody want to take the academy subscription. You can use my code Shankar10 to get the maximum discount of 30%. This is to be availed today only. So don't miss this chance. This is the last date for getting this opportunity and grabbing this offer, guys. So let's start. So the toughest paper in the history of the GATE. Okay, can you guess which particular year? Can you guess which particular year it is? आप guess कर सकते कौन सा साल पे हो गया एक ए वाला? Which particular year this happened? You can guess, yeah. You can do your job. मैं तो it's 20. You can fill the remaining two words, two numbers, two digits. So kindly tell me which particular year this happened. You can see in the chart also there is a link to grab that 30% off. Yeah, 2007 or 15. Okay, because those are the years. And GATE is given by what we call IIT Kanpur. You people are saying think based on that. Okay, so remaining people also please tell me your answer. Remaining people also please tell me your answer. Can you guess when it happened exactly? When it happened exactly? People are joining just now only. Yes. So many, everybody here, please try to comment. What is your expected year when this happened? When this particular thing happened? Can you guess? So 2023. वो तो नहीं होना चाहिए मेरे को भी. So 2002 बोल रहा है. 2002 तो IIT कानपुर तो नहीं दिया. 2001 पे दिया. ठीक है. 2015 बोल रहा है कुछ लोग. Yes. 2007 तो right answer है. 2007 electrical, many people claim that this is the toughest paper they have seen. Many people say the same, share their experience. Even the many senior professors, senior educators who teach you, many people, when I was a student also, I used to head about this particular paper, which is the toughest paper in the history of the GATE examination till date at that particular time and now also. But see here, there are many years they gave the tough papers in between also, but this paper is given by IIT Kanpur. So can you get some signals? You are getting any signal from this particular 2007 year electrical engineering ka paper happened? This is the year where the toughest paper happened. Okay, it is. There is no unique what we call. I cannot say this is the only answer. Different people will have different opinion. This is the mostly said answer. Okay, and with my experience also I am saying that. So 2007 पे हो गया this particular thing. ठीक है. So 2007 पेपर में
I'll ask you one question. At that time, GATE examination is per 150 marks and 85 questions. I don't waste much amount of your time because I value your time very much. So I'll leave you as early as possible, hardly 15-20 minutes. इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपका टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. 2007 पे हो गया ये वाला इलेक्ट्रिकल वाला बच्चों के लिए. एट दैट टाइम 150 मार्क्स is the question paper. I mean 85 questions. So can you guess the highest score out of the 150? That is highest का मतलब all India rank 1, 81 का स्कोर. अभी तो 100 पे कितना आ रहा है, चल रहा है 88 90 तक भी जा रहा है ना. सो उस समय पे व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक दे गॉट इट. हाईएस्ट 81 जो होता है ना, इनका मार्क्स पता है क्या आपको? ओके राइट. ईसी का भी टफ है बट उतना टफ तो नहीं, व्हाट वी कॉल मीडियम लेवल तो दिया. बट इलेक्ट्रिकल में हो गया ये काम, इलेक्ट्रिकल में ये तो हुआ. And see here, 2007 is the toughest paper in the history of the GATE till date. Is many people who say that 2012 ऐसा बीच में एक दो साल पे हो गया ऐसा toughest paper तो आया. This one is the toughest one, as many people say that. And what I want to ask you is this question: can you guess the highest marks out of 150? 150 is the all India first rank. Out of 150 में all India first rank का marks कितना पता है क्या आपको? 123 सोच रहा है, ठीक है. रितेश का आंसर. बाकी तो भी कमेंट करो यार, कुछ भी आप जो सोचते ना, डोंट स्पैम, बट आप लोग जो सोचते वो नंबर बताओ, जस्ट ए वाइल्ड गेस. अभी तो 100 में टॉप रैंक मिनिमम 80 मार्क्स तो चल रहा है आजकल. पिछले 3-4 इयर्स का रैंक आप देखेंगे तो एटलीस्ट 80-90 तक भी जा रहा है, ठीक है, 100 पे. सो 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है उस समय पे. सो डू यू नो द हाईएस्ट मार्क? प्लीज कॉमेंट, प्लीज कॉमेंट, प्लीज कॉमेंट. मैं तो वेट कर रहा हूँ आपका कमेंट के लिए, देन आई कैन मूव फर्दर. एवरीबडी हियर जस्ट टाइप ए नंबर यार. इसमें कितना टाइम लगेगा, इसके भी सोच रहा है क्या? 102, ठीक है. एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? एक्टिवली पार्टिसिपेट करो यार. हार्डली आई नीड योर इनपुट. जस्ट टाइप वन नंबर ऑफ योर चॉइस. यू कैन गेस समथिंग ना. टफेस्ट पेपर हो गया तो 135 प्लस इज द गेस. 135 आएंगे तो आई डोंट थिंक इट विल बी द टफेस्ट पेपर. सूरज तो दिया, ठीक है. So okay, I am revealing the answer. It will be around 57 plus. Okay, some 55 to 60 के बीच में हुआ. Exact number मेरे को भी पता नहीं, ठीक है. उस समय पे this data etc. they don't reveal it, but those who got first rank they only know how many marks they got it. So around approximately some 55 to 60 में ऑल इंडिया टॉप हो गया उस साल पे, फर्स्ट रैंक, ठीक है. जो लोग को 30 मार्क के आसपास आएंगे तो उनको भी बिलो 300 आया, बिलो 300 रैंक पे मिला. आई नो सम फ्रेंड्स, ओके, डोंट गेस माय एज फ्रॉम दिस, बट I know some seniors or some people who got below 30 marks and they got this what we call below 300 rank, and maybe some 10 marks or something they attempted. Those people also qualified in this particular year. That was the level of toughness in that particular year. Maybe if you see the paper now 2007 पे का पेपर अभी देखेंगे तो maybe you don't feel that much tough because उस समय पे resources are very low. You don't get these many number of resources to learn the GATE examination pattern or PYQs इतना सॉल्व करके. अभी तो you get more habituated for the GATE exam. That's a different case. But उस समय पे that's what we call the path breaking or something different kind of paper appeared compared to the last many years that happens in 2007. So this is what we call the highest marks out of the 150 is around 60 marks. उस साल पे 30 मार्क 20 मार्क में भी अच्छी रैंक मिला. I have seen similar kind of result in one more year in CSC paper. One of my student got 20 marks something. He got 2000 plus rank. He got the seat in NIT. Okay, that is the situation happens when the paper is really tough. So is it really the issue you need to worry if the marks are very low, if the paper is really tough? It is a competitive exam. What this information is giving you some sort of suggestion. इट्स ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम. रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करते यहीं पे. आप कितना भी मार्क्स, ओके, इजीएस्ट पेपर पे 70 मार्क्स आएंगे तो भी डजंट मेक एनी ग्रेट रैंक. आई थिंक इन 2019 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे ऐसा हो गया. ओके, सो इजीएस्ट पेपर दिया तो यू गॉट वेरी गुड नंबर ऑफ मार्क्स, यू डोंट गेट सफिशिएंट रैंक. बट
टफेस्ट पेपर में कम मार्क्स में भी यू विल बी गेटिंग द बेटर रैंक. सो एग्जाम लिखने समय पे व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इट इज द लास्ट वीक ऑफ योर एग्जामिनेशन, यू फेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज. एग्जाम लिखने समय पे बहुत कम मार्क्स आ रहे, डिप्रेस मत करना. यू शुड थिंक अरे यार इफ इट इज टफ फॉर मी, माय प्रिपरेशन प्रॉपर है तो सभी को टफ हो जाएगा. सो रिलेटिव परफॉर्मेंस में इट डजंट मेक मच डिफरेंस. टफ इज वेरी बेटर because those who don't prepare also will perform when the paper is easy, but if it is tough, only those who prepared properly can perform at least average way. So paper really tough आएंगे तो don't worry about that what we call अरे यार इतना टफ आएंगे तो क्या करना, अरे यार इस साल पे बहुत टफ आएगा, ऐसा स्पेकुलेशन भी मत करना. So this I am saying you 2007 पे हो गया. So when was the last time IIT organized this GATE examination is I can have the data 1989 पे दिया, 1995 पे दिया, 2001, 2007, 2015 and now this year they are giving. So I want to say one thing guys here, you don't do the over analysis. आपका काम तो ये नहीं एनालाइज एनालिसिस ज़्यादा करके सर इस साल पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इस साल पे भी मैं एक्सपेक्ट कर सकते क्या 2015 पे EMFT से इतना क्वेश्चंस तो आया, अभी तो आएगा क्या, सिग्नल से इस पर्टिकुलर साल पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इस साल पे आ सकते क्या. Nobody knows that. Nobody knows that. So to be frank, I can say one thing. Is there any relation between the last 3 years papers? You see 2007 तो टफ है, 2015 उतना टफ तो नहीं है, आसान पेपर तो दिया. इट इज ऑन एवरेज टर्म्स तो वेरी गुड पेपर तो दिया. सो 2001 का पेपर देख सकते हैं आप, तो इट इज तो नॉर्मल पेपर है. सो द सेम IIT if you compare with this and this particular year, there is not much relation here. The thing here is it depends on many factors here. Nobody knows who is giving you the question. Nobody knows. Nobody knows. You take any YouTube lecture in this entire country, कोई भी का lecture हटा के देख सकते. Nobody knows who is going to give your question paper. Nobody knows. Okay, so because even it is organizing institute is IIT Kanpur, they may invite some professors from other IITs also to give 1 or 2 questions. That can happen. And 2007 पे जो 2015 पे जो professors है ना, अभी तो वो retire हो सकते ना. That is quite 100% possible. Do you think the same professor will give you the question again to get the same standard? वो तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो 2007 पे 15 पे जो लोग है ना, वो लोग अभी है नहीं, ट्रांसफर हो सकते, रिटायर हो सकते, मे बी उनका माइंडसेट भी चेंज हो सकते, कुछ भी पॉसिबल है. सो डोंट कोरिलेट द थिंग्स हियर. आप उस पे टाइम वेस्ट मत करना. सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स 100% परफेक्ट. यू शुड सॉल्व ऑल द PYQs इंक्लूडिंग द IIT PYQs. आप देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं. बट आप ऐसा मत सोचना 2007 पे IIT कानपुर तो टफेस्ट पेपर दिया, 23 पे भी दे सकते, क्या दे सकते, नहीं दे सकते, हु नोस. ओके, 2015 पे पेपर और 7 पे पेपर देखो, कोई भी रिलेशन नहीं होता है. केवल सेम IIT दे सकते, एक साल नेटवर्क से 10 क्वेश्चंस देती है भाई, एक साल 2 क्वेश्चन ही देते हैं सेम IIT का पेपर. ओके, सो प्लीज डोंट व्हाट वी कॉल व्हाट आई वांट टू से इज ये दोनों तो आई मीन डोंट कोरिलेशन हो सकते, नहीं हो सकते. इट इज प्योरली डिपेंड्स ऑन योर लक. सो इस पे डिपेंड मत करना. आप क्या करना, आपका प्रिपरेशन सही से करना चाहिए भाई. ठीक है. सो 50 मार्क्स 60 मार्क्स से भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आना पॉसिबल है. ठीक है. 70 मार्क्स में भी बिलो 1000 भी नहीं आ सकते. दैट कैन ऑल्सो हैपन. इट इज ऑन बोथ द एंड्स. सो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द टफनेस ऑफ द पेपर. अगर एग्जाम का पेपर टफ है तो डोंट गो फॉर एनी नेगेटिव मार्किंग. इजी है तो भी डोंट गो फॉर नेगेटिव मार्किंग. आपको जो पता है वो लिख के आओ बस. इफ टफ, don't demotivate. Think if it is tough for me, tough for every single student who is writing the examination, so no need to worry about it. This is the positive thinking you must have. So let's have a look at this toughest paper. आपके लिए मैं तो पेपर लाया है कानपुर साइट से, मैं डाउनलोड करके. ठीक है. डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर तो डाउनलोड करके लाया, कोई साइट से नहीं. सो क्वेश्चन वाइज में कट कुछ नहीं किया. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन पेपर. You can see here in this question paper also, not really every question is tough. ये वाला क्वेश्चन तो डुएबल है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डुएबल क्वेश्चन है. ठीक है. ये क्वेश्चन आपको ही पता है, मेरे को पता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट रिलेटेड विद द कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल का पेपर ला रहा हूँ. दिस क्वेश्चन इज गुड. आई हैव डन दिस इन एनालॉग माय रेगुलर क्लास. इट्स नॉट वेरी इजी बट इट्स अ गुड क्वेश्चन. ठीक है. एंड दिस वन यू कैन डू इट. doable questions है. ठीक है. some questions are definitely doable in this 85 questions I can show you. हमारा सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस का,
ठीक है। एनालॉग का क्वेश्चंस तो नॉट डिफिकल्ट, तो आसान से आया, आई मीन रिलेटिवली गुड क्वेश्चंस तो आया, दीज आर कोर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चंस है। एंड a question 100% doable but little twist, I mean understanding the question might be difficult but not so many times I have observed one thing: understand the question properly. I have seen very tough questions, but if you understand the meaning of the question, it's not a tough question at all. I have seen this in 2018 in the digital questions, 2007 पे भी एक क्वेश्चन समझ हुआ, तो हम तो रेगुलर क्लास में भी किया डिजिटल वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। नंबर ऑफ वंस इन द सम ऑफ एस ऑफ some yes of a b c d and y, that is you should consider a b c d and also y. That twist, if you understand, you can answer it, that we have done in the regular class already earlier, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए मच डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू कैन डू इट, ठीक है। सो सिमिलरली आपका कोर का क्वेश्चन है ज्यादा, दिस 100% डूएबल, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर दिया, ठीक है। डिजिटल का क्वेश्चन है, दिस वन इज योर मैथ, कोर का क्वेश्चन है। एंड अगेन दिस इज a doable question, in fact I have done this in the class, स्टेट रेज इक्वेशन लिख के। एंड सिग्नल का क्वेश्चन है, डूएबल क्वेश्चन है, ठीक है। This question is not easy, but I have done it in the class, I think earlier also, okay। If you understand the basics, I mean network में transient and coupled circuits दोनों का मिल के दिया question, not really easy but okay, but doable provided your practice is done in a proper way, okay। This is a doable easy question, okay। And this is also a good question. You can see how many questions appeared in the networks, okay। This is 100% doable question. दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, ओके, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर, अभी तो माइक्रो प्रोसेसर सिलेबस में नहीं है। सो इससे आप क्या इन्फी व्हाट वी कॉल फ्रॉम दिस, व्हाट वी कॉल, क्या हुआ, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पेपर। ये पेपर से कोई फायदा नहीं होता है, इससे एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हो पाएगा, बट व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, इससे आपको क्या मिल सकते हैं, द इंफॉर्मेशन यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। सर मैं तो आई कैन लर्न वन थिंग, पेपर जितना भी टफ आएंगे तो कोई फर्क नहीं होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वी कैन नॉट गेस द पेपर दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर, सेम आईआईटी दिया तो भी क्वेश्चंस कैन बी डिफरेंट 100%, बिकॉज द पैनल में सेम आर चेंज आर एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। एंड वन मोर थिंग, यू सी द टफेस्ट पेपर ना, इसमें भी जो सब्जेक्ट्स आपको मार्क्स दे सकते हैं इज नेटवर्क्स, डिजिटल, analog for electrical I am saying relatively it is easy for analog for electrical, okay। अब signals देखो, ये वाला subjects जो है ना, इससे questions are either moderate or easy, you can see even the paper is very tough, they will save you, they will definitely save you, they will definitely save you। So these subjects when you prepare, if you are a next year preparation or whatever, maybe whenever you keep it in your mind, फुल फ्लेज्ड वे में प्रिपेयर करो यार, बेसिक सब्जेक्ट्स, नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, सिग्नल, मैथ, एप्टीट्यूड जो होता है ना, उस समय पे एप्टीट्यूड तो नहीं है, ये तो अच्छी से प्रिपेयर करो, बिकॉज व्हेन द पेपर इज रियली टफ, दीज आर द सब्जेक्ट्स सेविंग योर व्हाट वी कॉल रैंक और सेविंग योर एफर्ट और मेनी थिंग्स। सो दीज क्वेश्चंस, दीज सब्जेक्ट्स विल नेवर डिसअपॉइंट you 99%, 1% तो anything is possible, that's a different case, but at least many of these questions you will be able to solve it, you can see even in the toughest possible paper, right। So these subjects you should never leave it, keep it in your mind, okay। So 1 minute, so finally what I can say is you just on your own only open the 2015 paper and 7 paper, keep it side by side, there is no relation between them, hardly you feel any relation between them, okay। So even the same IIT gives, don't do the analysis like this, but do the PYQs, it is definitely good initiative, okay। Do the PYQs, Ankit sir ने class कर रहा है, okay, that is
Think like IIT Kanpur. This is a definitely good series. You should do all those questions, improve your knowledge. Undoubtedly, you should what we call जो IIT standard है ना इसको आप reach करना चाहिए. But don't do the expectations. Don't go with the expectations. ये हो जाएगा compulsory. इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा. ऐसा एनालिसिस करके आप प्रिपरेशन मत करना. प्रिपरेशन अच्छी से कर लो, ठीक है? And be to the standard of the IIT. Compulsory, your preparation must be with the standard of the IIT. But paper tough or easy, whatever happens, never disappoint it. It's a competitive exam. Hardly it matters the relative performance. So I already told you the toughest paper is given in 2007 history. Maybe easiest paper will come this year, but that doesn't have any effect on your preparation or in your rank. Hardly what happens is your examination का समय पे, because these things matters a lot, because when you see the toughest questions 3-4 questions आने के बाद आपका mind दिमाग खराब होके you will be thinking next year चलेगा सर, यार इतना प्रिपरेशन किया ये तो सब गया, ऐसा सोच के आप एग्जाम पे बैठेंगे तो even easy questions you will not be able to answer it. That is the reason I am doing this session. आपको toughest पेपर आएंगे तो भी confidence मत जाना चाहिए. द क्वेश्चंस यू शुड यू नो यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट. सो टफेस्ट पेपर में ये ट्रिक हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन टफ होके 2-3 क्वेश्चंस आसान वाले बीच में आएगा, बट मेनी पीपल ये फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस देख के बीच में इजी वाला क्वेश्चंस पे भी नहीं करेगा. ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये ओवरकम करना चाहिए. इसलिए वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स हियर. ओके, इज इट क्लियर? Is it clear? 2007 was the toughest. I am not saying that 2023 will be the toughest. It may be the easiest, it may be the toughest, it may be moderate, anything can be possible, but it doesn't affect your gate rank in any way. Okay, so these are the things I want to say. When toughest paper comes in your exam also, be mentally prepared for it. It is a competitive examination. It is tough for every single student who is writing in and around you. It is not tough for you, so that if you do the paper with confidence, with what we call ease of doing it, then definitely you can perform well and you can get a better rank. So there are the cases where even 20-30 marks in the gate rank fetched a very good rank also. There are cases where 70 marks doesn't give you a better rank also. So keeping all these minds, don't go with the speculations, don't go with the over analysis, don't go with the overthinking, but on the time of exam always be confident irrespective of the result, and don't go for the negative marking. Write the questions, attempt the questions which you know the answer. Don't go for अरे यार 50% probability तो दो ऑप्शंस तो मैं निकाल दिया, दो ऑप्शंस में एक सेलेक्ट कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ठीक है? डोंट थिंक दैट इतना मार्क्स तो कंपलसरी आना चाहिए सर, कंपलसरी सो आई एम गेटिंग ओनली 30 मार्क्स नो, सो रिमेनिंग 20 मार्क्स के लिए मैं सारे बबल करके आएगा सर. नहीं, जितना आएंगे तो उतना लिख के आओ यार, कोई दिक्कत नहीं. पेपर टफ है तो दैट में जेन्युइनली गिव यू द रैंक. अननेसेसरली नेगेटिव मार्किंग पर मत जाना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइस. Okay, it is, that's what I am saying, Ravi, that happened on that particular year. I have taken that example. Anything is possible. Even I can give a toughest possible paper. Many of the people who are watching this video, who are preparing the gate, cannot be able to attempt that. If I can give it, an IIT professor, why they can't give it? ECE or electrical or any branch, if they require, they think that they need to give, they can definitely give the toughest possible paper, no doubt in it. But that is not the way they are doing the question papers. They think they will be having some metrics, they think in the particular direction, and they will be setting the paper. So don't think that they can give the tough paper for electrical, ECE, any, if required they can give for any particular branch, no doubt in it. Okay, if they want they can give easiest paper for any particular branch. So generally based on the number of aspirants, how many seats available, they will set the paper. So be prepared for anything. That is the conclusion of the class. Okay, is it clear? So my suggestions, I feel that they will definitely be helpful. The previous test series wala and this one, keep both of them together. The marks doesn't matter at all. Your performance, your preparation should be going on in a proper way. Be confident while writing the exam. That's all from my side, guys. Thank you very much. All the very best for your preparation. Hardly 1 week. Give your best in this 1 week. Don't deviate for any other, anyway, in any way. Don't allow any sort of the negative thinking. Okay. Thank you very much. Okay, these are our rankers. Maybe next year I want to see your pics on my screen. I'll be very happy to see that. ठीक है, all the very best guys. IRMS का batches भी शुरू हुआ. आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो those who are for 24-25 aspirants, उन लोगों के बोल रहा हूँ, use my code shankar10 to get the maximum discount. अभी तो ऑफर चल रहा है, आपको 30% मिलेगा. So AMT एग्जाम भी इधर है, कल आप लिखना चाहिए तो use my code. लिखना चाहिए नहीं, लिखना कंपलसरी, क्योंकि दिस इज द लास्ट एग्जाम गोइंग टू हैपन, द ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट बिफोर योर ओरिजिनल एग्जामिनेशन. डोंट मिस दिस.
इसका link is available in the video description. So that's all guys, wholeheartedly I wish you all the best. Definitely you succeed in your examination. I feel in the next coming 1 week also we will definitely support you in all the possible forms. Okay, thank you. So what I am giving is my experience and my way of thinking. I am giving you in the logical way, so that may or may not be correct or not. It purely depends on how you take it. Okay, so this is my experience, my